ये स्क्रैप लैब्स के लिए मेरे पास एक एक्टिविटी है जिसमें कार्डबोर्ड होगा और कार्डबोर्ड में सारे बॉर्डर्स में फैंस होंगे बहुत सारे जिससे वो उड़े। सही तो है यार, उड़ नहीं सकता ऐसे। आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं? यस सर। क्यों? सर यहाँ पर बहुत मज़ा आता है सर, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाने को मिलती हैं। मुझे मज़ा आता है। क्यों मज़ा क्यों आता है? आप करते क्या हो? वो तो मुझे नहीं पता, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। Why? क्योंकि वो इतना इंटरेस्ट से करा रहे हैं सारा कुछ। It's fun. Like we enjoy while making things. Yeah, and they allow us to talk. The biggest reason that we are happy. स्कूल की क्लास में लाइक यू जस्ट बैठते हो और पढ़ते हो और बहुत कम एंजॉय करते हो, बट स्क्रैपलैब्स की जो क्लास होती है उसमें आप बहुत इंटरेस्टेड होते हो। Here we could actually see the concept behind the projects. We could actually learn these concepts because we are making it. We are understanding all the stuff. स्कूल में हमें पता सर, क्योंकि जो स्कूल होता है सर उसमें ढेर सारी पढ़ाई होती है, लेकिन सर स्क्रैपलैब्स में लोग मस्ती भी करते हैं, सीखते भी, नॉलेज भी मिलती है। That's why I like स्क्रैपलैब classes. It's entertaining, it's fun, it's something new that we do. So because it inspires us, it's getting nearby technology. घर पे जाके जब गर्मी लग रही होती है तो स्क्रैपलैब्स का फैन यूज कर सकते हैं। Because we get to know new things. When I come to school at Tuesdays, I feel like when will the next person will be there? I want to go there, and there's no rule. There's no particular test. You should do this. You should do that. If I want to do it or not. But it's really fun. Tuesdays are best. Tuesdays are the best. हाँ, मैं उनको तो बना के भी दिखाती हूँ। तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। It is a very good club because like from my younger times I loved engineering, and this club has given me a platform for doing all those things, all those crazy things that I like. I even feel good that चलो लड़की कुछ तो सीख रही है, and now she's like something. वो मैंने कनेक्शन सीखी जब मैंने अपनी सिस्टर को बताया तो बोलती वाह ये सब हमने 10th में लर्न किया था, अब वो 12th में है, लेकिन अभी उसने कॉमर्स लिया, साइंस ही लिए, तो शी इज आई डोंट इवन नो एनीथिंग इन दिस। We get to know the things that they do not teach in the school, extra things like the circuit and all that. We did not know that earlier. And from this only I have got interested in electricity and circuits, so I have got rank 1 in NSO, so it's just because of this. इसकी बॉडी बहुत भारी है, इसके अंदर की जो टेक्निकल चीज़ें हैं अगर हम उसे कार्डबोर्ड से जोड़ दें तो बॉडी का वेट नहीं बढ़ेगा, जिससे जो इसकी टेक्निकल चीज़ें होंगी